नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। भारत के 3 दिनों के आधिकारिक दौरे पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची। कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कहा, भारत जापान की मजबूत है साझेदारी। बिहार की बांकीपुर समेत मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को होगी मतगणना। बांकीपुर सीट नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद हुई थी खाली। चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की जांच जारी। बढ़ सकती है चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की मुश्किलें। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए दी तहरीर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से निजात। महाराष्ट्र के कई जिलों में लेकिन रेड अलर्ट, और असम में बाढ़ ने बढ़ाई टेंशन। पहाड़ पर भी बारिश का अलर्ट। और दिल्ली पुलिस के बहुत बड़ी कार्रवाई। आईएसआई मॉड्यूल के 4 संदिग्ध गिरफ्तार। बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच की बैठक हुई। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने संबोधित किया। संयुक्त आर्थिक मंच की बैठक में दोनों देशों के दिग्गज बिजनेस लीडर्स शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम और जापान की उनकी समकक्ष ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन भी किया। आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत जापान आर्थिक साझेदारी और इसमें विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि दोनों देश मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन विकसित कर सकते हैं। और पीएम ने भारत में निवेश और आर्थिक विकास की संभावनाओं को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण मौजूद हैं। एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। फ्रेंड्स, आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, when the going gets tough, the tough get going। इस समय सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में आपको, जहां पर जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में जानकारी दी जाए। Thank you, Randir. Good evening. Thank you all for joining this press briefing on the ongoing official visit of Prime Minister of Japan, Her Excellency Ms. Sanae Takaichi. You are aware that the Prime Minister arrived in New Delhi yesterday evening on an official visit at the invitation of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. This is Prime Minister Takaichi's first ever official visit to India. But the two prime ministers have met twice earlier. They were together at the G7 summit in Evian-les-Bains in France just last month, just a couple of weeks ago, in fact. And before that, in November 2025, last year, they met on the sidelines of the G20 summit in South Africa in Johannesburg. Prime Minister Takaichi is accompanied by a high-level official delegation and, more importantly,
with a very high-powered and very large business delegation, which underscores the importance of the B2B pillar in our relationship. Let me begin by giving you a brief overview of the engagements that have taken place thus far. Early this morning, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Thereafter, the two prime ministers held discussions both in the restricted and in the delegation level talks format at Hyderabad House. And during these talks, the leaders reflected on the very strong foundation of our bilateral ties across multiple sectors, including trade and investment, economic security, defense, supply chain resilience, technology, innovation, and people-to-people exchanges. And both leaders acknowledged the role that our special strategic and global partnership plays insofar as peace, prosperity, and stability in the Indo-Pacific and even beyond is concerned. In fact, at the outset of the discussions, it was recalled what late Prime Minister Shinzo Abe had said, that a strong Japan and a strong India were in each other's interest, and in fact, in the regional and global interest. And I think both leaders recognize that this is a relationship of exceptional trust. Some of you might recall that Prime Minister Modi had said, while addressing the G7 leaders just recently, that trust is the new currency of global partnerships. And that currency of trust, I would say, was visible in abundance in the engagements today. And it is that that allows the two sides to work with each other with a great deal of comfort. Today's engagements have yielded several substantial outcomes, broadly falling under three crucial areas, and I'll take you through them very briefly. These areas are economic security, energy resilience, and technology and innovation. First, on economic security, I think you would all note that in the current geopolitical climate, our two countries cannot but recognize and reaffirm economic security as one of the foundational pillars of our relationship. Also in recognition of the fact that economic security interests are increasingly more and more intertwined with overall national security interests. And during the discussions, it became clear that both leaders were on the same page when it came to recognizing the overlapping nature of the supply chain challenges that they faced, and hence the need for making common cause and developing reliable and unstressed supply chains. The economic security declaration that was agreed, and which you may already have seen, it should be on the MEA website in a short while if you haven't seen it. The declaration gives practical guidance to further strengthen project-based economic security cooperation. We have also issued the Economic Security Fact Sheet 2.0, which is an illustrative list of ongoing government and business engagements in this area. It is significant that many of the outcomes that were finalized during the course of this summit fall in the area of economic security, whether it's the Memorandum of Cooperation in the field of batteries or pharmaceuticals, including APIs and KSMs, or technical collaboration for resource exploration and mapping of critical minerals. The second major area of discussions today was energy resilience. We have also issued a joint statement on energy resilience, affirming that as
responsible powers, and major energy consuming countries, we will work together to jointly strengthen our respective energy resilience. And we've agreed to cooperate on strategic stockpiling and reserve mechanisms for crude oil and petroleum products, as well as exploring joint investments in maritime energy transport value chains. We have also announced today the Japan-India Cooperative Biogas for Growth initiative. Under this, Japan will partner with India in setting up 1,000 biogas plants all across India by leveraging the vast network of dairy cooperatives that already exists in India. These plants will produce bio-CNG and organic fertilizer using the abundant untapped resources of rural biomass, and thereby contribute both to energy resilience as well as rural prosperity. The third major focus of discussions today was advanced technology and innovation. Building on the India-Japan AI cooperation initiative, the leaders today released a joint statement on cooperation in the field of artificial intelligence. And the statement, as you will see, reaffirms the convergence between the vision of the two countries on the future of AI, which is a vision that is centered on safe, secure, and trustworthy AI that contributes to security and prosperity for all. It includes cooperation across the entire AI stack, from the necessary physical infrastructure to developing AI applications for public good. Japan has also reaffirmed its endorsement of the key outcomes of the India AI Impact Summit, which we hosted here in New Delhi earlier this year in February. I would say that artificial intelligence is emerging as a major sunrise sector in the cooperation between the two countries. There is a joint statement as well that's been released on the occasion of the visit, which should also be available very soon. The strategic convergence that is reflected in the joint statement is backed by very robust institutional linkages that have been finalized today. We've seen crucial agreements. In fact, if I speak specifically about the AI initiative and the understandings with regard to AI between India and Japan, we've seen some very crucial agreements on the development of large language models. IIT Bombay's Bharat Gen, for instance, and Japan's National Institute of Informatics have signed an MOU focusing on multilingual scientific LLMs and enhanced scientific reasoning. Similarly, India's Sarvam AI and Japan's Preferred Networks have established a framework for cooperation across the full AI technology stack, including foundational models. Finally, looking ahead to 2027, which marks the 75th anniversary of the establishment of diplomatic ties between our two countries, the two sides have agreed to a list of commemorative outcomes and events with a strong focus on youth to celebrate this milestone in a befitting manner. We will celebrate the year 2027 as the India-Japan Year of Shared Horizons. Prime Minister Sanai Takaichi has also invited Prime Minister Modi to visit Japan next year for the annual summit, and this annual summit will come in the midst of these celebrations. Earlier today, in fact, just a short while ago, following the bilateral talks, both leaders participated in the India-Japan Joint Economic Forum. Economic cooperation, as I said earlier, lies at the heart of our bilateral relations. You might recall that at the 15th annual summit held in Tokyo last year, the leaders had announced a target of 10 trillion yen in private investment. I will just take a moment to very briefly outline the significant progress
that has been made towards that target in just the last few months. More than 120 B2B MOUs have been signed since the last summit in August 2025. And these MOUs, in fact, reflect an aggregate investment commitment of around 10 billion US dollars. I don't know if any of you were at the forum, but this is an overview of the 120 MOUs and the investments that it covers. But I believe a detailed list of these MOUs has been shared with you as well. Just to take a few examples, MUFG Bank recently undertook the largest ever cross-border investment in India's financial sector with a 40,000 crore rupee stake in Shriram Finance. Sumitomo Chemical and Tata Electronics are collaborating on the local manufacturing of semiconductor materials, building on the already existing partnership between Tokyo Electron and Tata Electronics. IHI Corporation and Acme Group have agreed to jointly produce 400,000 tons of green ammonia annually in Odisha. As I said, I think the full list of these MOUs has been made available. And what is remarkable is the sheer range of engagements from manufacturing to financial services to advanced technologies, even film production. This wide range of substantive outcomes perfectly captures the diversity and the dynamism in this relationship. So taken together, the exceptional breadth and depth of these government and business outcomes underscores what is already an extremely successful visit by Prime Minister Takaichi to India. It reaffirms that the India-Japan Special Strategic and Global Partnership is not only an anchor for peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific, but also a dynamic engine for global economic growth and technological innovation. I think there was great clarity today during the discussions that the deep complementarity between Indian and Japanese factors of production can lead to win-win outcomes, and both sides can cooperate to really good effect. I just want to add here in the context of something the Prime Minister said at the Joint Economic Forum, which is that he was talking about the reforms that India has carried out successively in the last several years, aimed at improving the ease of doing business. And in that context, the Prime Minister's office here in New Delhi will organize an India week, a Japan week, excuse me, exclusively for Japanese companies to address the issues that Japanese companies might be facing. And this is yet another example of our commitment to making the business-to-business relationship a really important part of the overall ties between the two countries. Insofar as the rest of the program for the visit is concerned, later tonight, the Prime Minister will host Prime Minister Takaichi for a private dinner at his residence, following which tomorrow morning Prime Minister Takaichi will depart for Tokyo. So let me stop there, and if you have any questions, I'll be happy to try and answer them. Mm-hmm. So the floor is open. We start with Rishabh there. Foreign Secretary, good evening. This is Rishabh from NDTV. So when we are talking about economic security, talks between the two sides, apart from the broader understanding, are we also looking at diversifying our critical minerals and rare earth minerals as important texts like semiconductors? Dependence on one country has become a problem now. So what are the steps that we are taking there? Siddhant. Hi, sir. Siddhant from Vion. Sir, there was an announcement on defense aspect as well. Where do Japan and India look towards defense cooperation at a time when Japan is looking for export of defense technology, and it is shedding the inhibitions of the past? Huma.
So I'm Huma Siddiqui here. I have two questions. Was the SEPA upgrade discussed? And my second question is, you didn't mention the space cooperation, even though Japan and India are working together on 2 or 3 space missions, if there is something that you can share. Krishna Mohan. सर कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में दोनों कंट्रीज ने काफ़ी आगे जाने की बात की है। जरा इसके बारे में हमें डिटेल से बताएं कि ये कितना का पूरा एग्रीमेंट होगा और कब तक इसका क्या प्रॉस्पेक्ट है आगे। मधु। सर मधुरेंद्र मैं न्यूज़ नेशन से। इंडो पैसिफिक का बार बार जिक्र जो है वो किया गया, खासतौर पे स्टेटमेंट में पीएम मोदी ने भी किया, फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक एंड रूल बेस्ड ऑर्डर का। हाल ही में हमने देखा था कि इंडो पैसिफिक से इंडो जो टर्म है उसको यूएस ने हटा दिया था, पैसिफिक कमांड कर दिया था। क्या इस पर दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की कोई बातचीत हुई? और मेरा दूसरा सवाल है कि कोई इंडियन डिफेंस प्लेटफॉर्म जिस पर जापान ने इंटरेस्ट दिखाया हो, उसके बारे में अगर बताएं। So we can take these questions. So, Rishabh, your question on diversifying sources for critical minerals, rare earths, etc. As I said, there was considerable discussion on these issues. I think the leaders agreed that given the phase that we are going through right now insofar as geoeconomics and geopolitics is concerned, and especially as seeing how over the last 5 or 6 years supply chains in a whole host of areas have come under stress. But the ones related to critical minerals and rare earths are of particular concern because these are essentially materials that today go into components and products that are critical for everyday life. It's not just their use in specialized platforms, but they go into the phone that you hold in your hand, they go into the vehicle you drive. So they concern an enormously broad range of products and their supply chains. And it was agreed that, as you also mentioned in your question, that we had to move away from this dependence on a single or even very few sources, and that there was a need to develop both strategic autonomy as well as strategic resilience insofar as these topics are concerned. So this is insofar as specific agreements, etc., are concerned, these are obviously subjects that lie within the domain of private sector actors in both countries. The governments have certainly sort of spelt out a framework for cooperation and encouraged cooperation in these areas. There is ongoing cooperation in, for instance, Japanese companies looking to set up rare earth permanent magnet facilities in India. I know of a couple of companies that are currently looking at this, and there is work going on at the research end as well on this. So we look forward in the coming months for this to develop as a major sector of cooperation between the two countries, driven largely, of course, by private sector to private sector cooperation. Siddhant, your question on defense, and इसमें मधुरेंद्र आपने भी जो प्रश्न पूछा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो so first of all, what I would say is that we obviously welcome the evolution of Japanese postures insofar as defense exports is concerned. There has been a considerable and, from our perspective, positive evolution on this issue. And today there was discussion between the two leaders on
defense-related issues as well. And there was agreement that we could look at cooperation in multiple areas. In fact, Prime Minister Modi suggested that this cooperation could span the entire spectrum from designing to production, manufacturing. Insofar as specific platforms are concerned, you would have noticed the leaders marking the progress on the major project that is underway right now between the two countries, which is the Unicorn project, which is a naval radio antenna related project. In addition, there was a reference to cooperation across land, air, naval systems, unmanned vehicles, and systems of various kinds. There was a recognition of the increasing tempo of exercises that are being conducted by the forces of the two countries. We've of course conducted naval exercises for a long period of time, but increasingly now, and in some cases for the first time ever, there are land exercises and so army exercises and air force exercises as well that are being conducted. And Prime Minister Takaichi made specific mention of the need to bolster institutional cooperation in this area, and in that context, the 2+2 mechanism, which brings the foreign and defense ministers of the two countries together on the same platform, that was referenced by her. And we look forward to the next meeting of that platform in Tokyo at a mutually convenient date. So this is clearly a growing area of cooperation between the two countries. मैं मधुरेंद्र, ये तो डिफेंस के बारे में था, लेकिन आपने शायद इंडो पैसिफिक के बारे में भी सवाल किया था। तो इंडो पैसिफिक को लेके विस्तार से चर्चा हुई दोनों लीडर्स के बीच में, और मैं ये कहूँगा कि बातचीत की शुरुआत में ही दोनों लीडर्स का ध्यान जो स्वाभाविक भी है एक तरह से दिवंगत प्रधानमंत्री आबे के उन्होंने जो किया इसको लेके और जो कहा इसको लेके उस पे गया। दोनों ने उसके बारे में बात की, उसके बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री तकाइची ने आबे-सान की जो यहाँ पे 2007 में यात्रा हुई थी और उनका एक बहुत ही मशहूर भाषण जो उन्होंने भारत में यहाँ पार्लियामेंट में संसद में दिया था, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू ओशंस, जहाँ पे इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक तरह से उसका एक चित्र खींचा। तो इसके चलते फिर प्रधानमंत्री तकाइची ने जो हमारा एक फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने जो इसे एक नया रूप देने की पहल की है, अपडेटेड फॉइप जिसे वो कहती हैं, जिसका माने ये है कि जो बाकी चीज़ें इंडो पैसिफिक के देश कर रहे हैं, जिनमें क्वाड के देश भी शामिल हैं, उनमें और अधिक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता कैसे आए, उनमें और अधिक रेजिलियंस कैसे बढ़ाई जाए, और जो बाकी सब चीज़ें हम बायलैटरली कर रहे हैं वो उसी से जाके जुड़ती हैं। प्रधानमंत्री तकाइची ने ये भी कहा कि जो फॉइप का कॉन्सेप्ट है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट है, वो सीधा जाके भारत के महासागर विजन से जुड़ता है। तो इसके चलते काफ़ी आपसी सहयोग की संभावनाएं बढ़ती हैं। दोनों लीडर्स ने ये माना कि इस चीज़ पे जो हमारा अभी तक का सहयोग है वो अच्छा रहा है, इसे और आगे हमें बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट जो अगली आपको ध्यान होगा कि क्वाड के अंतर्गत एक इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क स्थापित किया गया है,
और उसकी अलग अलग मीटिंग्स होती रहती हैं। तो उसकी जो अगली टेबल टॉप एक्सरसाइज है वो जापान उसको होस्ट करेगा। तो मैं कहूँगा कि दोनों लीडर्स में आज ये एक कंसेंसस देखने को मिला कि क्वाड को लेके वो इस पे सहयोग बढ़ाने का काम आगे जारी रखेंगे। Huma, your questions on the SEPA upgrade. Yes, it was discussed. I can confirm that the Prime Minister referred to the fact that the bilateral trade between India and Japan, which is somewhere in the range of $27 billion, does not really do justice to two of the largest economies in the world. And as you are aware, there is a comprehensive economic partnership agreement between the two countries, but it is somewhat dated now, especially in the context of, or rather I should say, the new context of the new trade arrangements that are now being struck across the world. And we have, in fact, made this proposal to our Japanese colleagues in recent times now that it may be time to look at a significant upgrade of the SEPA and review its provisions. And I can report to you that Prime Minister Takaichi confirmed during the discussions that Japan was prepared to look at the SEPA upgrade, and that officials from both countries should get together to take the next steps on this. So that's something that is very welcome. Yes, yeah. So I mean, there wasn't detailed discussion on space related issues, but you're right. This is a very important area of cooperation between the two countries, and the Japanese Space Agency is very interested in our launch vehicle setup that is run by ISRO, and in fact it is using it for the launch of some satellites. They would like to use it. I think we have this program called LUPEX, no, the LUPEX, which is there. So it's an ongoing area of cooperation and an important one. कृष्णा, आपका प्रश्न मैंने जवाब दे दिया है जो रेयर अर्थ्स और क्रिटिकल मिनरल्स को लेके है. So, Srinjoy. So, as the two navies and the defense ministries have already discussed this, did the issue of building the Mogami class warships, which is this huge project, possibly making them here in Mumbai, did it come up in the meeting? Gautam. Thank you. Foreign Secretary, this is Gautam Lahiri, independent journalist. Well, my question is, 2 years ago, I think 2-3 years ago, the Japan Prime Minister has announced, Libyan Prime Minister announced a policy of free open Indo-Pacific. Whether this issue was discussed, because this, apart from many things, it encompasses the connectivity of Northeast India through India and Bangladesh to the Southeast Asia and beyond. Whether this policy still exists, whether you have any discussion on this issue. Thank you. Archis. Sir, were there any discussions on establishing a mechanism on local currency settlement? And secondly, I believe the initial plan was to host the summit in Guwahati, which couldn't take place because of logistical issues. But could you give us a broad outline of, the importance of the northeastern region, India's northeastern region, in India-Japan relations?
नीरज? सर, नीरज न्यूज 18 इंडिया से। जापान के पीएम ने अपने दौरे पर आने से पहले ही इंडो पैसिफिक पे बहुत जोर दिया था अपने बयानों में, लेखों में। मेरा सवाल यह है कि जापान बहुत सक्रिय दिख रहा है क्वाड को लेकर, और अमेरिका की बेरुखी भी दिख रही है, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप की। अभी हाल में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, तो क्या आने वाले वक्त में जो लीडर्स सम्मेलन है, जो बहुत दिन से प्रस्तावित है, क्या उसे लेकर दोनों नेताओं में कोई बातचीत हुई है? दूसरा सवाल यह है कि क्या लोकल करेंसी में ट्रेड को सेटल करने का कोई प्रस्ताव है दोनों देशों के बीच में? आकांक्षा? ओके, सर्जना। नमस्कार सर, मैं सर्जना सनमार्ग से हूँ। सर, क्वाड की जो मीटिंग होनी थी वो यूएस की ट्रेड पॉलिसीज के कारण काफ़ी डिले होती जा रही है। अब क्वाड का क्या फ्यूचर है, क्या उस पर आज कोई डिस्कशन हुआ? अभिमन्यु? Sir, I'm Abhimanyu Sharma from CNBC TV 18. Sir, were there any discussions on the issue of labor mobility, on expediting that between both the countries? So we can take these questions. Srinjoy, your question on specifically on building Mogami class frigates. Now, I know that this subject has been in the news, largely because we have been having some discussions with our Japanese counterparts on the general subject of shipbuilding. Japan is a major shipbuilding nation, and as you are aware, shipbuilding has emerged in the last several years as a major priority, especially in the infrastructure area in India. So it's natural for us to have discussions with the Japanese on this issue. Today, just to be specific in response to your question, there was no discussion on the Mogami class frigates as such. But as I mentioned, both leaders did allude to the possibility of cooperating on a whole host of air, land, and naval systems. And the designated agencies on the two sides are in touch on these issues. I'm sure that at the appropriate point in time, specific issues, including the one that you are referring to, may well come onto the table and be discussed between the two sides. Gautam, on your question related to free and open Indo-Pacific, but I think, I mean, I've answered that in some detail, but you have included this question about the significance of Northeast India in Japanese policy, and I think that's also part of Archis's question on the importance of the Northeast region. And you're right. I mean, there was some consideration earlier that we might look in the light of the importance of the development of the Northeast region as a matter of national policy, and the fact that we've had good cooperation between Japanese agencies, including JICA, for instance, in various projects in the Northeast, that we could look at hosting the summit there. But eventually, because of time constraints, etc., you're aware that there is an ongoing parliament session in Japan. So the Prime Minister arrived only late yesterday and is leaving early morning tomorrow. So given the short time available and off-site or out of capital summit would probably have been slightly more difficult. But nonetheless, the issue of the Northeast is well recognized, and we have seen a number of Japanese projects that look at the Northeast as a base. And today as well, yeah, there have been there's a large number of visits also by Japanese dignitaries who have been visiting India, who've visited the Northeast specifically as well. And there are think tank exchanges focusing on the Northeast that have taken place recently as well.
So today as well, Prime Minister Takaichi did refer to the continuing interest of Japan in that. So that's something that we will continue to take forward. You are aware that one of the projects in the semiconductors area, for instance, is being developed with Japanese assistance in Assam itself. So that is a continuing issue on the agenda. A number of you have asked about local currency settlement in there. So, I mean, today there wasn't detailed discussion on settlement of trade in local currencies, but both of us do recognize the importance of enhancing our bilateral financial cooperation and collaboration on payment systems between India and Japan, including the issue of local currency transactions. So these are issues that will be taken forward between the financial authorities of the two countries as we move ahead. Let me deal with this question that Abhimanyu asked about labor mobility. You are aware that there is an MOU between India and Japan on human resource exchange. And that was something that was announced during the last summit, the 15th summit that was held in Tokyo. And under that, there are a number of programs that are being taken forward and executed. Today also, there was a considerable amount of discussion and reference to the importance of exchange of talent between the two countries. And Prime Minister Modi referred to it in his remarks, as also in his remarks at the Joint Economic Forum. This is an area where we feel, once again, there is a great deal of complementarity between the two countries, between the two economies. I think Japanese business and other sectors have a need for skills and talent in certain sectors that India, with its demographic advantages, is in a very good position to fulfill at this point in time. So these are things that will be taken forward under the human resource exchange program that the two countries have agreed on. Finally, there are a number of questions. A number of you have raised this question about the Indo-Pacific, the Quad, the summit, etc. I mean, these are not really the central point of this particular bilateral summit, but as I have said, that the importance of the Quad, the importance of cooperation in the Indo-Pacific, and the importance of remaining engaged on these issues was reaffirmed by both leaders during their discussions today. And insofar as specific engagements are concerned with regard to, I mean, you referred to the Quad Foreign Ministers meeting, which has taken place just recently in India. And I mean, I would say you should stay tuned, because there will be more activities and events related to Quad that will happen in the coming months. Insofar as other meetings related to the summit, etc., are concerned, you are aware that these are things that are subject to convenience of calendars, etc. The Quad mechanism, which functions at the level of Sherpas and Sous-Sherpas, they are in touch with each other on a whole host of interactions amongst themselves, including the issue of the summit, and it'll be decided in that network. I would urge you to take a look at the joint statement, which has a considerable amount of detail on the approaches towards the Indo-Pacific and related issues. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press conference. Thank you very much for your participation. विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें विशेष रूप से जो जापान की प्रधानमंत्री
भारत यात्रा पर आई हैं और जो द्विपक्षीय मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इसके साथ ही जो आर्थिक मंच पर दोनों नेता मिले सीईओ के साथ और सभी उद्योगपतियों के साथ, उसके बारे में जानकारी दी गई। 3 अहम क्षेत्रों पर जो बातचीत हुई उसमें एक आर्थिक सुरक्षा का क्षेत्र है, दूसरा एनर्जी रेजिलियंस का क्षेत्र है और तीसरा टेक्नोलॉजी इनोवेशन और एआई के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, समझौते हुए हैं और इस पर और ज़्यादा सहयोग करने की बातचीत हुई है। तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और ये भी उन्होंने बताया कि अगले साल जापान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान आने के लिए आमंत्रित भी किया है। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की कुछ और बड़ी खबरें। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंझलपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी महीने 30 जुलाई को तीनों सीटों पर मतदान होगा और 3 अगस्त को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के बांकीपुर की सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये बांकीपुर सीट खाली हुई थी। और उपचुनाव के ऐलान के बाद तीनों राज्यों में राजनीति गर्मा गई। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक नए राजनीतिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला एक गुट दावा कर रहा है कि उसके पास पार्टी के अधिकांश विधायक और संगठनात्मक ढांचे का समर्थन है और इसीलिए उसे ही पार्टी की आधिकारिक मान्यता और चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर इस गुट का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग के फुल बेंच से मुलाकात कर रहा है। गुट का कहना है कि वास्तविक समर्थन उनके साथ है, इसीलिए चुनाव चिन्ह पर उनका अधिकार बनता है। वहीं दूसरी ओर मौजूदा टीएमसी नेतृत्व ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि यह गुट संगठन का गलत दावा कर रहा है और पार्टी के नाम तथा चुनाव चिन्ह का अनुचित उपयोग भी कर रहा है। इस संबंध में चुनाव आयोग और संबंधित संस्थाओं के पास शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। अब मामला भारत निर्वाचन आयोग के सामने है, जो ये तय करेगा कि क्या यह विवाद किसी औपचारिक पार्टी विभाजन का मामला बनता है या नहीं। यदि हाँ, तो आयोग यह भी निर्णय ले सकता है कि टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह किस गुट को दिया जाएगा। 22 तारीख जून महीने में कलकत्ता में जो हमारा डेलीगेट सेशन हुआ, उस डेलीगेट सेशन से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमेटी, नेशनल वर्किंग कमेटी चुने गए और अरूप राय, वेटरन पॉलिटिशियन, मल्टीपल टाइम्स एमएलए एंड फॉर्मर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको पार्टी का चेयरपर्सन चुना गया। तो जैसे ही हमारा ये डेलीगेट सेशन हुआ, स्पेशल सेशन, हम तुरंत इलेक्शन कमीशन को हमारा जो 23 तारीख की हम लोग हमारा भेजे थे इलेक्शन कमीशन के पास। हम लोग 23 तारीख की हमारा जो बात है वो जमा किए थे और इलेक्शन कमीशन से गुजारिश किए थे कि हम लोग जितना डेलीगेशन वो लोग अलाउ करेंगे, 5 होगा 5 से ज्यादा होगा उससे ज्यादा, हम लोग आएंगे और फिजिकली फुल बेंच को मीट करना चाहते हैं। हम लोग इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देंगे कि आज इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच, उन लोगों से हम लोगों का मिलने का मौका मिला। और अब अगली बड़ी खबर। राम जन्मभूमि चढ़ावा और ट्रस्ट से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में अयोध्या अधिवक्ता संघ ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है।
अधिवक्ता संघ ने थाना राम जन्मभूमि में तहरीर देकर ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। अधिवक्ता संघ के अनुसार तहरीर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा समेत कुछ अन्य लोगों के नाम शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि दस्तावेजों के आधार पर नामों में बदलाव की भी संभावना जताई गई है। बार एसोसिएशन का दावा है कि राम मंदिर आंदोलन से उसका वर्षों पुराना जुड़ाव रहा है और जनहित में सामने आए तथ्यों को कानून के दायरे में लाना उसका दायित्व है। संघ का आरोप है कि दान, आभूषणों और अन्य संपत्तियों के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की आशंका है। इस संबंध में कई दस्तावेजों का अध्ययन किया जा रहा है। अधिवक्ता संघ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, CBI जांच कराने और यदि आरोप सही पाए जाएं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। यहाँ पर अभी हम लोगों ने अपने संघ के निर्देश के अनुसार जो है यहाँ पे थाने पर कापी दे दिया गया है। कापी की उन्होंने एक अपनी जो जन सुनवाई की पर्ची होती है उन्होंने पर्ची भी दे दिया। तहरीर हमारी यहाँ पेंडिंग है। अभी उन्होंने कहा बताया कि हम अभी GD को कायमी पे रखा करके आपको GD की कापी देंगे। हम अब तो FIR दर्ज करें ना करें उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब SSP साहब को हम प्रार्थना पद देंगे नियमों के अनुसार, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है कि ये FIR यहीं दर्ज कर लेंगे। आगे की खबरों में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर उत्तराखंड के किच्छा में एक 90 साल की मुस्लिम महिला की 4 एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि उधम सिंह नगर के किच्छा में खान फार्म एस्टेट में मौजूद इस प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज स्वर्गीय कुलसुम खान के नाम पर थे। अभी इस संपत्ति पर उनकी 90 साल की बहन नसरीन खान रह रही हैं। प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस 90 वर्षीय महिला की जमीन हथियाने का प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक परिवार खुद को जनता और अल्पसंख्यकों का हितैषी बताते हैं, लेकिन जमीन से जुड़े मामलों में उनकी भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर 4 एकड़ की भूमि है खान फार्म एस्टेट नाम से। ये किच्छा उधम सिंह नगर में आती है। सो ये 4 एकड़ की भूमि है जिसका खान फार्म एस्टेट के नाम से है, जो किच्छा उधम सिंह नगर के अंदर आती है। अब अगर इस भूमि की आप ओरिजिनल लैंड डीड निकाल कर देखेंगे तो ये ओरिजिनल लैंड डीड एक लेट कुलसुम खान के नाम पे है। अब इस लैंड पे उनकी बहन, जिसकी उम्र इस वक्त 90 साल की है, नसरीन खान रहती है। अब सोचिए, गांधी वाड्रा परिवार जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताता है, ये किस तरीके से किसी की जमीन को नहीं छोड़ते। तो हर जमीन में, भले वो प्रियंका वाड्रा हो या रॉबर्ट वाड्रा हो, उनके किसी न किसी परिवार के व्यक्ति के जरिए वो उस लैंड पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं। आगे की खबरों में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 3 जुलाई से कोलकाता में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। लोकसभा सचिवालय और पश्चिम बंगाल विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अहम शिविर का उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कई तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नए विधायकों को विधानसभा की कार्यप्रणाली, संसदीय परंपराओं और विधायी प्रक्रियाओं की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। 4 जुलाई को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के समापन भाषण के साथ ही इस प्रशिक्षण शिविर का भी विधिवत समापन हो जाएगा। बिहार में पटना मेट्रो का विस्तार लगातार जारी है और इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 नए मेट्रो स्टेशन मलाही पकड़ी और खेमनी चक का उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम सम्राट चौधरी ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मेट्रो में सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने मलाही पकड़ी से भूतनाथ तक 3 किलोमीटर का सफर महज 5 मिनट में तय किया। अब ISBT से मलाही पकड़ी तक 6.2 किलोमीटर की दूरी करीब 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस रूट का किराया 30 रुपये होगा। फिलहाल खेमनी चक स्टेशन पर यात्रियों के लिए ठहराव शुरू नहीं हुआ है, जिसे अगले 2 महीने में चालू कर दिए जाने की संभावना है।
पटना में 31.9 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना पर 13,365 करोड़ रुपए की लागत से काम जारी है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत का मानवीय सहायता अभियान ऑपरेशन अमिस्ताद लगातार जारी है। इस मिशन के तहत भारतीय सेना ने फील्ड हॉस्पिटल स्थापित किया है, जहां भूकंप प्रभावित और घायल लोगों को 24 घंटे चिकित्सा सुविधा और उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। अभियान को और सशक्त बनाने के लिए कौंसलर मैत्रेय कुलकर्णी को भी वेनेजुएला भेजा गया है। भारत की त्वरित राहत एवं बचाव पहल की वेनेजुएला में व्यापक सराहना हो रही है और स्थानीय लोग भारत के प्रति आभार जता रहे हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद वेनेजुएला के लोगों के प्रति भारत की एकजुटता और मानवीय सहयोग का प्रतीक है। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय कर्तव्य भवन 2 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात उनके द्वारा थल सेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद पहली औपचारिक बैठक रही। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने जनरल धीरज सेठ को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दी। दोनों के बीच सेना की परिचालन तैयारियों, सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति, आधुनिकीकरण, स्वदेशी रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और भविष्य की चुनौतियों पर रणनीतिक चर्चा की संभावना जताई गई। जनरल धीरज सेठ ने हाल ही में भारतीय थल सेना के 31वें सेना प्रमुख COAS के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने 30 जून 2026 को पद ग्रहण किया, जब निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेवानिवृत्त हुए। सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने अपना दृष्टिकोण विजय प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस, भविष्य के युद्धों के लिए तैयार और बहुक्षेत्रीय संचालन में सक्षम बनाना है। जनरल धीरज सेठ इससे पहले सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्रों से लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।